क्वीन E8. क्वीन E8 बोल रहे हो? क्वीन E8 सॉरी E7. E7. E7 E7. तुम श्योर हो? नहीं सर, वो क्यों नहीं क्यों देखा प्रॉब्लम था। क्या है? नाइट प्रॉब्लम क्या है? नाइट 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 देखा नहीं मैंने। नाइट क्या वो चीज है। ओके, तो बिशप C3 आई थिंक हो सकता है, फिर क्वीन हटेगी तो फिर पॉन G7 कैप्चर करके 4 कर सकते हैं किंग और रुक का, फिर फिर प्रमोशन भी हो रहा है। E7 और E8 पे तो हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि इसमें नाइट है और ये इसमें सर, किंग है, तो और और उधर कुछ तो ढूंढो, किंग, और कुछ ढूंढो, और कुछ आई थिंक बिशप C3 ही होगा। ढूंढो। आइडिया क्या है बिशप C3 का? सर फिर क्वीन हटेगी तो पॉन G7 पे कैप्चर करके फोक कर देगा और प्रमोट भी हो जाए, एग्जैक्टली प्रमोट हो गया तो कैप्चर हो जाएगा, बट और बिशप रुक भी सपोर्टेड जाएगा है ना। ओपोनेंट का। यस सर। परफेक्ट। एक और एक चीज है, तुम हाथ क्यों हेडफोन पे लगे रखे हो? मतलब वो हटाना पड़ता है बहुत, पता नहीं ये दबा देते हैं पूरे कान को। ओ अच्छा, टाइट है बहुत। कान थोड़ा बड़ा है, आई डोंट नो, इधर से साइड से जो बड़े कर लिए बस। हाँ बिशप सीट, आई थिंक दिस मस्ट बी द मूव, और तो कोई मूव नहीं है। एंड करेक्ट, बिशप सीट इज द करेक्ट मूव। फिर कैप्चर कर लेंगे एंड क्वीन को। कैप्चर, परफेक्ट परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, ये वाले। नाइट कैप्चर्स D4, सो क्या कैप्चर किया है? अच्छा पॉन कैप्चर किया है। पॉन। तो ब्लैक देख रहे हैं कि ये तीनों पीसेस अटैक कर रहे हैं एंड देयर आर ओनली टू डिफेंडर्स। वन डिफेंडर इज बिशप एंड नाइट, एंड देयर आर थ्री अटैकर्स, नाइट, बिशप और क्वीन। बट इसलिए वो नाइट टेक्स D4 किया, लेकिन एक टैक्टिक मिस कर गए। तो व्हाइट टू प्ले। मैं तुम्हें हिंट्स दे सकता हूँ, पहले तुम कुछ ढूंढ लो क्योंकि पहला मूव इंपॉर्टेंट है, ठीक है? द फर्स्ट मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हाँ आई थिंक आ गया। क्या? बिशप H7. राइट आइडिया, करेक्ट आइडिया, बट रॉन्ग मूव ऑर्डर। ओके, मूव आई ऑर्डर थिंक वो सेकेंड मूव होएगा फिर। ओ सर आ गया मेरे को। बिशप कैप्चर्स नाइट एट एग्जैक्टली, दी। एवरीथिंग वी शुड कैप्चर, हाँ, एवरीथिंग वी शुड कैप्चर, एंड एट द फिर एंड जब क्वीन कैप्चर करेगी तब तब सो दैट बिशप वी गेट द H7 क्वीन। इफेक्टिव होंगे। एग्जैक्टली। सो बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, queen takes D4, and bishop takes H7 and with the queen. Now आयन, इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ये, क्योंकि पहले मूव पे इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले मूव पे जो D4 कैप्चर हो रहा था, there will be two different way you can do that. Either you can capture with the knight or either you can capture with the bishop. बिशप। तो तुमने बिशप चुना है, that is correct, but is there anything wrong with knight? नो सर। ठीक है, देख के ठीक तरह से देख के बताओ, क्योंकि एक गलत है एक सही है, मतलब ये गलत तो है। क्यों गलत है? दिस इज नॉट राइट। नॉट राइट मैंने क्या बोला?
बिकॉज सर वो कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो क्वीन से करेंगे तो क्वीन जाएगी फॉर द बिशप. ऑफ कोर्स, बल्कि नाइट कैप्चर्स नाइट करने से बिशप चला जाता है, सो सेम पीस एक यस साइड आ सर. जाएगा. सो दैट इज नॉट, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. कंटिन्यूएशन, चलो नेक्स्ट. वेरी गुड. ओके, सो बिशप मूव ऑन. अच्छा बाप रे बाप, बाप. बिशप c7 व्हाइट ने खेला है, सो थ्रेटनिंग द क्वीन. ऑफ कोर्स दिस इज अ थ्रेट, यू हैव टू बी केयरफुल. जहाँ पे रूक डिफेंड कर रहा है. So it says this is a wrong move and we can take some advantage. How? कैसे? We can take the advantage. It seems like it is a very मतलब it seems like it is what's wrong with this move, है ना? रुक तो support कर रहा है, and but this is a tactical error. That means this is a blunder. ओके. सर क्वीन देखते टू क्या क्या तुम ढूंढ पाते हो ये अपने. c8. क्वीन c8 बहुत ही नेचुरल मूव है, एंड दिस इज वन ऑफ द मूव ब्लैक व्हाइट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. This is one of the move white is expecting from you, because you white attacks your queen, you just moved your queen into c8, defending your queen. So this is very normal, but why I'm saying this is a mistake. So queen said, of course, queen said कुछ कर रही है, मतलब queen कुछ कर रही है, like the queen is doing anything. No, you just sidestep the attack, not any threat. You're Katie. तो देखो इसका मोटिव जो है, अगर मोटिव तुम जान लेते हो देन यू कैन सॉल्व इट. तो क्या तुम कुछ हिंट्स लेना चाहते हो? यस सर. आई थिंक इसमें होएगी सर. ओके, तो मैं तुम्हें हिंट्स दे रहा हूँ. इसमें जो मोटिव आता है वो बैक रैंक वीकनेसेस के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके. आ गया सर. बिशप टू. सॉरी. बिशप नहीं. rook to c8. Rook to c8 looks very, very logical and very interesting. Rook c8, your attacks the rook where it might be a checkmate threat. So rook c8, bishop captures queen, rook captures c1 check, bishop f1, and rook captures d. This is what I am looking at. This is what I am looking at. Is there anything else we have other than you can pick queen 8 or queen set? But I don't think so. That is quite enough. But rook set looks something really cool here. बताओ, shall we go? Rook c8. और भी यस क्या सर. है बताओ, और क्या, और भी क्या है? कुछ भी तो नहीं. चलो rook c8. Rook c8. यस. Okay, but they choose different. They choose just they took the knight. So now we have a choice between capture the bishop and capture the other bishop. कौन सी bishop capture करोगे? Think about it carefully. I think sir c7 bishop. Because then the opponent will capture with the rook, then he'll capture with queen, and ठीक we ठीक तरह can से देख के बताओ. backrank. इसमें
अगर ठीक तरह से खेलोगे या तो फिर तुम चेकमेट के एक आइडिया पे चले जा सकते हो, और या तो फिर एक पीस अप होंगे. सो अभी तो है तीनों पीसेस, मतलब व्हाइट हैज थ्री पीसेस, यू हैव टू पीसेस, बट प्लेस इन अ वे दैट यू विल एंडेड अप वन एक्स्ट्रा पीस, मतलब तुम्हारे पास दो पीसेस रहेंगे, उसके पास बस एक. Hmm. Sir, we'll capture the e4 bishop. Exactly, with getting the tempo on the queen, because all the time the queen is enprised just because white can't Hmm. capture because of the checkmate. So in meanwhile, you Yeah. can play the in between, capture the bishop and threat over the queen. That's very Hmm. simple. Okay, now queen carefully sidestep the pawn and overprotecting the bishop on c7. And make sure the bishop is always be there, white is thinking, because there is always a mate threat. So now there are two defenders here and we have two attackers here. So how to solve this issue? So that means if we maintain and keep put more pressure on the bishop, we are able to win the bishop. Make, I mean, also every single time bishop cannot be moved because of the checkmate. तो अभी तो दो डिफेंडर है, दो अटैकर है. सो कैन यू गैदर मोर अटैकर्स ओवर द बिशप? ले आ सकते हो? Yes, sir. We can. Bishop e5. I think that can. डेस्परेट है, लेकिन मुझे तो ख्याल से क्वीन कैप्चर कर लेगा डिफेंडर. Hmm. तो बिशप e5 नहीं Won't हो रहा है. matter. तो फिर एक Pawn e5 might work. I don't know. interpose. This is called interposing. You're interposing between the bishop and queen by pushing the Hmm. pawn to e5, threatening capture the rook, Okay. bishop, and also threatening to capture the queen. So e5 is actually winning on the spot, है ना? Okay, sir. e5. अब वो क्या खेलेगा बताओ? If capture the queen, Um. rook c1 mate. Then checkmate. अब pawn takes He'll c5 cap. होता है, then rook Hmm. c7 and threatening mate. वो भी capture करेगा, and still they cannot capture due to mate. So they'll protect Hmm. like knight c3 and you can पीस अप हो गया ना. मैं बता रहा था. Hmm. Yes, sir. एक छोटा सा मैं हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं. रूक टू c8 and let's see the first time if we they capture rook c1 and bishop f1. Black to play. Hmm. Find the move. This could be the first variation where white actually didn't play this continuation. Rook captures bishop. किंग कैप्चर कर लेगा ना. नहीं, तुम नाइट डी no, नहीं नहीं sir. नहीं, तुम नाइट डी की Rook बात, captures. ये वाले मूव No, sir. Rook captures bishop at f. d8. Oh, okay, it's playable, but you have force sequence like Hmm. force your opponent, threat create करो. किंग के ऊपर ऑलरेडी बैक रैंक पे तुम चले गए. बिशप इज द ओनली डिफेंडर ऑफ द किंग. प्रेशर क्रिएट करो, पुट प्रेशर. And also look, knight cannot move, the rook is hanging, so Hmm. white is helpless on the back rank. Sir, knight to d2. नहीं नहीं नहीं, नाइट है, नाइट है, नाइट है. Okay. That. और क्या हो सकता है? और एक मूव है to put pressure on. Bishop to b5. Exactly, powerful move and checkmate threat. वही बिशप को बचा नहीं सकते Hmm. क्योंकि चेकमेट आएंगे. फॉर एग्जांपल टेक्स, we have mate here, so they have to protect. For example, if they play knight d2, what you can do? Shall we capture this rook? Yes, sir. I think you can capture the knight because we can win the queen instead. Yes, sir. We can do that. Right. Yeah, So that's they, good. they, they might play g3 in order to, if rook takes f2, f1, the king can move around. But you know what? Um, So we are winning. rook Yeah, rook takes. rook to f2. Rook We f2, can do हाँ, rook लेकिन queen f2. f2, knight f2, bishop f6. G takes f6, king takes. Hmm. That seems like.
So it seems like Yeah. the game will continue. I'm not though that much convinced with this continuation. Rather, just keep the rook, everything hold on like that. Take the bishop first, and then you're ready to capture. Yeah. For example, knight d2. I think not maybe knight c3 looks good. Uh, yeah, knight c3 looks good. Then if we capture, this is now this is winning extra piece. Yes, sir. Right. So this will be the Sorry. maximum continuation in several variation we can have. Next, मजा आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट पजल बहुत ही कॉमन एंड वेरी Easy. कॉमन सीक्वेंस बहुत कॉमन है. Whenever you have a queen here and the bishop here over this diagonal and black plays the pawn to g6, so the move comes very naturally since the rook is pinned. Bish बताओ बताओ. Sir, bishop to G Bishop 6. g6, exactly, because rook is pinned. But there is a question: shall we capture the rook or not? Does you have anything better? Think carefully. Because in Yes, chess game, sir. every single time you We should should not. capture the pawn, I guess. एक बात मैं बता When दे रहा हूँ, एक we टिप्स. capture the pawn, then king e7 and bishop captures g5. ऑसम, ऑसम. मैं एक बात कहना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एवरी सिंगल टाइम तुम टॉप लेवल प्लेयर पे भी देखोगे कि दे आर इवन their play everything happen quite a few seconds, even they know what to do next. For example, you capture a certain piece, they even think right before they play the obvious capture. This is their quality and this is their habitude. So that is why you know that you're going to capture the rook or pawn, but you still think a bit more that you are not missing anything else. Because, for example, bishop takes this is pawn takes c6, so many players will take the rook. Yes or no? Yes, sir. Very tempting, but no. We have the right other move which is much more better. Checkmate nahi hai. Checkmate nahi hai d2. We can Knight win the can queen. We come. can win the queen. We can Hmm. win the queen. अब बताओ, कैप्चरिंग द रूक और ये वेरिएशन कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स ये वेरिएशन, इसमें क्वीन ले रहे हैं. Yes, sir. याद रखना, तुम जानते हो कि दिस इज द ऑब्वियस मूव इज कमिंग एंड यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू recapture immediately, but still think a couple of seconds. बहुत ही टिपिकल मूव है. एक सेकंड, ये कौन सी परसेंट मतलब व्हाट. एक्चुअली ब्लैक मिस. ओके निश, that is why baba. Okay. So black played d5 and white naturally captured the pawn on d4. Alright. तो तो व्हाइट बहुत ही नेचुरल सा मूव प्रोड्यूस किया है. पॉन टेक्स d5, लाइक ओके आई कैप्चर द पॉन, व्हाट्स रॉन्ग. बट ही ओवरलुक समथिंग. क्या है वो? Hmm. He overlooked something. क्या है?
नहीं आ रहा है? हम्म, क्या प्रॉब्लम है? समझ नहीं आ रही कि इसमें करना क्या है। उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि the position is not that much complicated. You can see all the pieces here. हम्म, So of course the solution is very forcing way. मतलब complexity नहीं है, complexity नहीं है. Simple solution. And your pieces also are all on the back rank. So if any move will come, it must be one of them. Will go out and thread, go out and thread. So that means you have to look at all the pieces and their alignments. कि कौन सा पीस बाहर जाके किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्वीन एफ फाइव चेक, ये हो सकता है, बट दिस चेक इज नॉट डूइंग एनीथिंग सिंस queen f5 and simply knight c3 or even bishop d2, and you have to go back with your queen or even capture the pawn, so it does not make that much sense. तो फिर है क्या? थिंक अबाउट द लाइंस. अलाइनमेंट्स देखो, अलाइनमेंट्स देखो. pawn takes d5 we can do, but pawn takes d5 is not make any sense after pawn takes d5. क्वीन टेक्स g5 से भी कुछ नहीं होगा। क्वीन टेक्स d5, हाँ तुम थ्रेट कर रहे हो d5, बट दे कैन कैंसिल, कैंसर, कैसल को कैंसर क्यों बोल रहे हो? एंड कैसल कुछ नहीं है. और क्या है? और क्या है? अटैकिंग मूव देखो, पोस्टिंग मूव देखो, ओपोनेंट को थ्रेट करो. क्या है थ्रेट, क्या है? वेयर इज द अटैकिंग मूव? अटैक करो, जस्ट सिंपली अटैक. हम्म, नहीं आ रहा है. इसमें नो, व्हाइट की दो पीसेस डेंजरसली प्लेस्ड है, डेंजरसली प्लेस्ड है. यस, मैं दिखाने के बाद ही तुम देख पाओगे. Queen and bishop, they are placed on the same alignment and they are on a dangerous place. दिख पाए? अब move. See the move? Not that hard. Queen and bishop. We have a skew one now on the board. We have a skew one now on the board. ओह बिशप h6, इतनी देर बाद bishop h6, boom, gap. इजी मूव थी ये। बहुत easy, definite skewer, and queen cannot capture due to knight is protecting, and the queen यस must सर, move, and once queen move we can simply win this juicy bishop. बताओ, बहुत ही आसान होता है. सो और देखो बहुत पोजीशन भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, पीसेस भी बाहर नहीं है कि तुम्हें बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, सब बैक रैंक पे फिर भी इनविजिबल काइंड ऑफ. Bishop's h6, that's the move, and game over. So queen moves,
y takes, and followed by we'll take the another pawn. हार्ट नहीं था यार. That was not expected from you. कोई बात नहीं, कर लो. This one. ये क्या है? अच्छा ये क्या? White to play. Mhm. We can see one knight is pinned here, and अटैकिंग मूव ढूंढो. तुम्हारे पास चेक है. अगर चेक दोगी, फॉर एग्जांपल बिशप टेक्स c6, they will simply capture it. देखो, I don't think so. कुछ नहीं. कुछ नहीं हो रहा है. So अटैकिंग मूव ढूंढो, पीसेस के ऊपर अटैक करो. Bishop e3 is not doing anything बिशप e3 much. बहुत ही लॉजिकल मूव मुझे लग रहा है वैसे. बहुत ही लॉजिकल मूव लग रहा है. Good. बट आई थिंक या बट व्हाट. ओके, सो तुम क्वीन क्वीन के ऊपर अटैक करना चाहते हो ना? यू वांट टू. Yes, sir. बट बिशप e3, क्वीन f8. Is there any other way? You can do put pressure on the queen with other kind of move, others different moves. और कुछ है? सर मैं 1 मिनट में आता हूँ.